अच्छा जी, नहीं लेट्स करते। स्टार्ट। मैं नहीं रिपोर्ट करता हूँ। हैं? नहीं करता सर, रिपोर्ट नहीं करता। अच्छा, चलो। नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया आपने सर? हाँ, ये जॉर्नल है। हाँ। इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि लाइनें बनी हुई हैं, और लाइनें बनी होने की वजह सर वन नोट इस्तेमाल करा हैं? वन नोट में भी आ जाती है। वन नोट बहुत अच्छा है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट का है हमारे पास। हाँ आईबीएम का हाँ रजिस्टर्ड हाँ भी हाँ है। हाँ हाँ हाँ, वन नोट देखा है मैंने, देखा है, राइट यू आर। उसमें एनीवे, भी लाइनें आ जाती है। हाँ, तो ये असल में आई इंस्टेड ऑफ राइटिंग डाउन नोट्स ऑन पेपर एंड टेकिंग पिक्स, making PDF file from scanner. So this journal gives me a chance to write down my notes directly. हैंडराइटिंग ज़रा अभी काबू में नहीं आ रही है, क्योंकि जो पैड के ऊपर लिखना है वो ज़रा मुश्किल होता है। सर कौन सा पैड है आपके पास? यार ये पैड उसका है, वैकॉम। हाँ, वायरलेस वाला है या? नहीं यार, ये वायरलेस होता तो मैं उसको ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे ला सकता था। केबल भी इसकी बाज़ औक़ात हिल जाती है। एनीवेज, सर वो हाँ बोलो। छोड़े सर, मैं भी असल में भी लेने वाला था तो मैंने कहा पता कर लूं। Anyways, let us get started. Perhaps I will have only one session today. Second session में ले नहीं पाऊंगा आज. I promise that some part of theory of integration I have to discuss to conclude the course. And today and another session, and I will try to cover up as much as possible of the basics of the theory of integration, जिसका कुछ हिस्सा तुम लोग एलिमेंट्री कैलकुलस में रीमान सम के तौर पे पढ़ चुके हो. So here I am starting with the revision of the same. Given a function which is defined and bounded on an interval AB, subset of R. What we do is we consider a breakup of this interval into smaller subinterval, choosing points in different ways. And this set of points जो कि हम इसके subinterval बनाने के लिए consider करते हैं, उस set of points को हम partition कहते हैं. आमतौर पे we denote it by capital P. So left end point of the interval A is x0, then x1 is to the right of that, x2 is to the right of x1, and so on. And up there, this xn is in fact equal to, let me write down here, it equal to B, the right end. सर कुछ बच्चे वेट कर ओए होए, आप उनको ले जी लेंगे क्लास में? जी जी. सर ये कमरा बंद कर देना सर। क्या कह रहे हो? इस कमरे का ऑप्शन बंद कर दें, वेटिंग रूम का। फिर क्या होगा, डायरेक्टली खुद आ जाएंगे? हाँ ये खुद आ जाएंगे। तो ये ऑप्शन कहाँ से बंद होगा? Disable annotation, hide names of annotators. सिक्योरिटी की शील्ड बनी भी आ रही होगी नीचे। सिक्योरिटी, उस पे क्लिक कर। हाँ सिक्योरिटी की नीचे शील्ड आ रही होगी उल्टे हाँ हाथ की तरफ आपके। हाँ बिल्कुल. उल्टा। रिमूव पर उस पे क्लिक डिस्प्ले करें। रिपोर्ट एनोटेट स्क्रीन, लॉक मीटिंग, एनेबल वेटिंग रूम, इसको मैं ये ऑफ कर दिया, डिसेबल। हाँ डिसेबल कर दिया. तो अब लोग खुद ब खुद आ जाएंगे? खुद ब खुद आ जाएंगे। श्योर? ये ना हो कि थोड़ी देर बाद यस सर, 100%, 200% श्योर। ओके ओके, चलो ठीक है.
So I was saying that you have studied some basics of the theory of integration in the name of Riemann sum in some earlier calculus courses. What you did there was, I'm describing right now, कि एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है एक इंटरवल ए बी पे, नॉट ओनली डिफाइंड बट बाउंडेड है. इस इंटरवल के साथ सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि सब इंटरवल्स बनाते हैं इस इंटरवल के. उसके लिए जो पॉइंट्स इस्तेमाल करते हैं उन पॉइंट्स का सेट जो है दैट इज कॉल्ड पार्टीशन ऑफ द गिवन इंटरवल. Of course, we have a variety of ways in which the partitioning of the given interval can be done. The result is always a set of subintervals. और ये जब partition बनाए तो हम ख्याल रखते हैं कि x naught leftmost, then x1 on the right, x2 on the right of x1, and so on, indicated here. Riemann sum is written as this. Function value multiplied by interval width, subinterval width, that is. Now, where this function value is evaluated, it is evaluated at a point which may be any point of the subinterval, ith subinterval, xi minus 1 to xi. So this, if we leave the choice of point in the subinterval where we evaluate the function, we call it general Riemann sum. But you studied the left Riemann sum and the right Riemann sum. And the difference between left Riemann sum and the right Riemann sum, the ith interval पे, which starts at xi minus 1 and terminates at xi, you evaluate the function value at the left end point of the subinterval, that is xi minus 1. And that makes the left Riemann sum. Function values, अगर आप left end point पे कैलकुलेट कर रहे हैं सब इंटरवल्स के तो लेफ्ट रिमन सम, अगर राइट एंड पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं फंक्शन वैल्यूज तो राइट रिमन सम. Now this function value is the height of a rectangle and this is the width of the rectangle. This width is along horizontal and this height is vertical. So the product of one such term is the area of the rectangle. Then all such areas are added together, that makes the Riemann sum. Let us quickly demonstrate the use of Riemann sum, finite Riemann sum calculation for any function. So I consider the example fx is equal to x square, and the interval is from 1 to 2, so a is 1, b is 2, and we consider equally spaced partition. Equally spaced partition का मतलब है हर इंटरवल की विड्थ जो है वो कांस्टेंट होगी. जितने इंटरवल आपने बनाने हैं विड्थ ऑफ द इंटरवल को उस नंबर से डिवाइड कर दें. So if I consider 5 subintervals of the interval 1 to 2, that means the width of every subinterval b minus a by 5, which is 2 minus 1 upon 5, 1 by 5, or 0.2. Now that defines also my partition. A, which is x naught, is equal to 1. Then x1 should be delta x1 away from 1. Starting point से 0.2 step आगे, अगला point further 0.2 steps आगे, अगला point further 0.2 step आगे, and so on. So अगर 0.2 steps से तुम points consider करते चले जाओ तो मेरे partition में अब कौन कौन सी point है? 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 and 1.2. In तमाम points of the partition of interval 1 to 2, function value calculate कर लें. So fx naught is 1 square, fx1 is 1.2 square, fx2 is 1.4 square, so on up to fx5, which is 4. Now, out of these 6 values, अगर मैं left hand point पर Riemann sum बना रहा हूँ, so I will use this formula. Is it?
हाँ, इसमें मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी कि पहले मैंने ऊपर लिखा था i इज इक्वल टू 1 to n-1 और यहाँ था लेफ्ट ह्यूमन सम में fx i-1 और xi-1। इंडेक्स को पीछे खींच लिया, इंडेक्स को पीछे खींचा तो i इज इक्वल टू 0 to 4। हाँ, तो fx i हो गया और xi + 1 - xi। तो व्हेन i इज इक्वल टू 0 इसका मतलब है x1 - x0 और फंक्शन वैल्यू एट x0। So now my equally spaced partition gives me delta x. Instead of writing down this interval width with every term, I just write down delta x, which I have evaluated as 1/5 or 0.2. And once you have a constant in the sum, that constant can be taken outside. Now the work is only to sum up the function values at left-hand points. इसका मतलब है ये लेफ्ट हैंड पॉइंट है पहले इंटरवल का, ये लेफ्ट हैंड पॉइंट है दूसरे इंटरवल का। राइट हैंड पॉइंट बी जो है वो लास्ट इंटरवल का राइट हैंड पॉइंट है, तो लास्ट इंटरवल का लेफ्ट हैंड पॉइंट जो है वो यहां तक आएगा। तो वी विल कंसीडर फॉर लेफ्ट रिमन सम x इज इक्वल टू 1 to x इज इक्वल टू 1.8, जिस पे फंक्शन वैल्यूज निकाली, उनको सम अप किया, डेल्टा x से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास रिजल्ट आ गया 2.036। इसी तरह अगर वी गो फॉर राइट हैंड calculation, right hand Riemann sum, we will use starting at x1 function values x1 से लेके x5 तक। इसका मतलब है ये 1 को ड्रॉप कर देंगे फंक्शन वैल्यू और इसमें 4 ऐड कर देंगे जो लास्ट फंक्शन वैल्यू है, उससे हमें राइट Riemann sum मिल जाएगा। Now, before I go to the right Riemann sum calculation, I show you that this is only a qualitative expression for this function or qualitative demonstration of this function कि x स्क्वायर जो है, जो हम इंटरवल कंसीडर कर रहे हैं पॉजिटिव राइट साइड पे, यहाँ पे ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो लेफ्ट Riemann सम जो है वो एक तरह से लोअर सम होगा। वाई? मेरे पहले इंटरवल में लेफ्ट हैंड पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू ये है, दिस इज द फंक्शन वैल्यू, सो दिस इज द हाइट, दिस इज द विड्थ, तो दिस इज एंटायरली बिलो द ग्राफ। सो हर रेक्टेंगल जो मैं बना रहा हूँ वो लोअर रेक्टेंगल्स हैं। सो दैट मीन्स कि जब मैं इन सबका एरिया ऐड करूंगा तो जो सम आएगा वो एक्चुअल एरिया अंडर द कर्व से नीचे होगा, जिसकी वजह से हम लेफ्ट Riemann सम को इस केस में लोअर सम कह रहे हैं। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता, क्योंकि हम हर इंटरवल में लेफ्ट हैंड पॉइंट पर ही, यानी अगर मैं फंक्शन डिक्रीजिंग ले लूं तो लेफ्ट हैंड पॉइंट पे यू विल हैव द लार्जेस्ट वैल्यू, तो वो अपर सम बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं राइट fx x स्क्वायर जो कि इंक्रीजिंग है ओवर ab राइट Riemann सम बनाऊं, इसका मतलब हर इंटरवल पे जो हाइट लूं वो राइट हैंड पॉइंट वाली हाइट लूं, तो दैट विल बी द लार्जेस्ट हाइट ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो अब जो रेक्टेंगल्स बनेंगे वो कर्व के ऊपर बनेंगे, सो दैट विल मेक एन अपर सम। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर या के बजाय कोई फंक्शन डिक्रीजिंग हो, तो अब जब तुम राइट हैंड पॉइंट पे रेक्टेंगल बनाओगे या राइट हैंड पॉइंट वाली हाइट लोगे, तो अब यही राइट Riemann सम जो है अपर के बजाय लोअर हो जाएगा फॉर एफ डिक्रीजिंग। So with this geometrical demonstration, we calculated the right Riemann sum. हमने 1 की वैल्यू छोड़ दी, फंक्शन की वैल्यू जो 1 आई थी लेफ्ट हैंड पॉइंट ऑफ द फर्स्ट इंटरवल को वो छोड़ दी,
राइट एंड पॉइंट ऑफ एवरी इंटरवल हमने फंक्शन वैल्यू कंसीडर की, जिसका मतलब है हमने राइट एंड पॉइंट ऑफ द लास्ट इंटरवल पे फंक्शन वैल्यू 4 कंसीडर की, सम ऑफ द फंक्शन वैल्यूज लिया, उसको डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ये वैल्यू आ गई. Now previously we had what value? 2.036. This time we have got 2.636. Whereas we know that what is the integral of x square, x cubed by 3 in the limit 0, 1 to 2, and we get the value 2.33333. And we note that lower Riemann sum is less than the actual value of the integral, and right Riemann sum is greater than the actuals. But if we can increase somehow सब इंटरवल्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस इंटरवल को के दो हिस्से बना दूं, तो अब लेफ्ट रिमन सम में ये एक्स्ट्रा एरिया आ जाएगा, इसके अलावा यानी इस रेक्टेंगल के अलावा एक्स्ट्रा एरिया आ जाएगा. इसी तरह अगर मैं हर सब इंटरवल को के अंदर मजीद पॉइंट कंसीडर कर लूं, सो आई विल बी एडिंग सम एरिया. That means I have a mean of increasing the lower sum. इसी तरह अगर मैं जो अपर सम है उसमें मैं पॉइंट कंसीडर कर लूँ इन बिटवीन, फॉर एग्जांपल हियर, तो अब एक रेक्टेंगल ये होगी और एक रेक्टेंगल ये होगी. इसका मतलब ये हुआ कि आई विल बी लीविंग आउट दिस एरिया. सो जो अपर एरिया है मैं अगर ज़्यादा पॉइंट्स कंसीडर करूं तो वो कम होता चला जाएगा. लेकिन none of the upper sum can be lower than any lower sum. Similarly, none of the lower sum can ever go greater than any upper sum. We teach these things at first year level when we teach Cal 1, Cal 2 somewhere. We also go for infinite Riemann sum, and that is कि अगर लेफ्ट Riemann sum है तो जो भी मेरे पास सम है n approaches infinity, that means मैं पार्टीशन में infinitely many points consider करूँ. राइट Riemann sum में भी लिमिट अगर लगा दूँ n approaches, so I can get infinite Riemann sums. So वही फंक्शन, वही इंटरवल, डेल्टा एक्स आई यानी कांस्टेंट सब इंटरवल या फिक्स सब इंटरवल, साइज दैट इज b माइनस ए अपॉन n. तो पहले 5 इंटरवल थे, अब हम n इंटरवल ले रहे हैं क्योंकि हमने n इंटरवल्स पर रीमन सम बनाना है और उसके बाद रीमन सम विल बी अ फंक्शन ऑफ n एंड देन वी विल अप्लाई लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी. सो डेल्टा एक्स को 1 अपॉन n की फॉर्म में रख देते हैं एंड देन लुक एट फर्स्ट पार्टीशन कि जो हम इंटरवल्स बनाएंगे वो कैसे बनेंगे. First point, x naught is equal to 1, which is a. Next point will be 1 plus a. सर ये लेफ्ट सम और राइट सम जो हमने पहले जो क्लास में पढ़ा था, अपर सम एंड लोअर सम, ये वही चीज है? जी जी वही चीज है, मैं अभी कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा, वही रिवाइज कर रहा हूँ. ओके सर. So x starting x naught 1. The next point should be 1 plus delta x, and delta x is 1 by n. So x1 will be 1 plus 1 by n, x2 will be 1 plus 2 by n, x3 will be 1 plus 3 by n, xk will be 1 by k by n, and let me add the last point, xn will be 1 plus n by n, and that will become 2. Acha ji. So let us consider infinite left Riemann sum. Function values evaluated at each of the point in the partition. Delta x constant 1 upon n. We have calculated here. Delta n is 1 upon n. Delta x is 1 upon n. और function क्या है? Whatever is input, take the square of it. So ith interval का जो left hand point है, that is our x.
where we are evaluating the function. अच्छा जी, समेशन में रनिंग इंडेक्स आई है, लिहाजा 1/n पे इफेक्ट नहीं करेगा वो. 1/n can be taken outside the summation, and let us simplify whatever there is in the summation. Before doing that, how can I write down xi minus 1? Xi minus 1, we noted that x2 is 1 plus 2 upon n, x3 is 1 plus 3 upon n, xk is 1 plus k upon n. So xi minus 1 should be 1 plus I minus 1 by n, whole square. उसका होल स्क्वायर लिखा मैंने. जितनी भी टर्म्स बनी उनमें से सर हम लोग xi माइनस 1 क्यों ले रहे हैं? लेफ्ट रिमन सम है. मेरा कोई भी इंटरवल जो है ओके ओके. xi माइनस 1 से xi है. सो लेफ्ट हैंड पॉइंट पे ले रहे हैं, इसलिए x 1 प्लस आई माइनस 1 अपॉन एन लिया है. अच्छा जी, इसकी सिंप्लीफिकेशन आफ्टर स्क्वायरिंग हम क्या करते हैं कि वो टर्म्स जिनमें आई आ रहा है उनको सेपरेट करते हैं, और वो टर्म जिनमें आई नहीं आ रहा उनको सेपरेट करते हैं, एंड सम इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल सच टर्म्स. ये जो समेशन है ये पूरा एन आई इंडिपेंडेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा और समेशन ऑफ 1 बचेगा. एंड आई होप यू रिमेंबर दैट समेशन of 1 I going from 1 to n is equal to n. चुनाचे ये पूरा I इंडिपेंडेंट पार्ट समेशन से बाहर आया और समेशन 1 जो है वो n आ गया. ओके. I square, this is nothing but the sum of the first n whole numbers, और उसका फॉर्मूला है n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. Then we have the term 2n times summation I. Summation I is just the sum of the first n whole numbers, positive integers, जिसका फॉर्मूला है n into n plus 1 upon 2. लास्ट टर्म में भी यही सब कुछ इन्वॉल्व हो रहा है. Let us simplify this function, which is now entirely dependent on n. Simplification step, algebraic step, तुम लोग गौर कर लेना. जब न्यूमरेटर यानी जो ब्रैकेट के अंदर जहां कहीं भी है, अगर सब में से n क्यूब कॉमन निकालो तो बाहर का n क्यूब कैंसिल हो जाएगा. अंदर क्या बचेगा? इस टर्म में से जब तुम n क्यूब बाहर ले जाओगे तो ये बचेगा, इसमें से n क्यूब बाहर ले जाओगे तो ये आएगा, इसमें से n क्यूब बाहर ले जाओगे तो ये आएगा. लास्ट टर्म में n क्यूब नहीं है, लेकिन मैं जबरदस्ती n क्यूब निकाल रहा हूँ तो ये बचेगा, और थ्रू आउट n क्यूब निकालेंगे तो बाहर वाला कैंसिल हो जाएगा. एंड वॉट एवर इज लेफ्ट विद अस इज दिस, these terms in the bracket, these terms in the bracket, these terms in the bracket, and these terms in the bracket, where everywhere reciprocal of n is there, and I can apply limit n approaches infinity. ये term, ये दोनों term सब zero हो जाएंगी, and I will be left with 1 from here, 2 by 6 from this term, 2 by 6 के से 1 by 3 आ जाएगा, और इस term से 1 आ जाएगा, and that is 2 and 1/3, which is the exact value of the integral. So infinite left Riemann sum से हमें exact integral मिल गया, integral value मिल गई. इन्फिनिट राइट Riemann sum मैंने किया हुआ है, इसमें I minus 1 नहीं है, तो अलजेब्रा थोड़ा सा आसान है, इसको आप खुद देख लीजिएगा. एंड लेफ्ट Riemann sum का कि लिमिट लो n approach infinite, या राइट, आई विल गेट फॉर दिस फंक्शन same value, and that is equal to value of I get infinite left Riemann sum and infinite right Riemann sum because the function is integrable. And we have to look into the problem of what do we mean that a function is integrable. So let us move forward. This was just a revision of what you have done already.
मैंने जनरल सम की टर्म इस्तेमाल की थी थोड़ी देर पहले, लेकिन उसके बाद जो काम हमने किया उसमें इंटरवल जो है xi-1 से xi, उसको मैंने कांस्टेंट साइज ले लिया था, और कांस्टेंट साइज लेने के बाद मैंने कहा था कि दैट इज b माइनस a अपॉन n। लेकिन अगर अनइक्वली स्पेस पार्टीशन लूँ मैं, तो डेल्टा xi विल नॉट बी कांस्टेंट। Now downward, and we consider this situation unequally spaced partition. So what we have at hand for development of the theory of integration, function should be defined first, then bounded. These are the least thing that we need. हमने कंटिन्यूटी क्लेम नहीं की, हमने कुछ और, हमने डिफरेंशिएबिलिटी क्लेम नहीं की, हमने सिर्फ फंक्शन डिफाइंड। दैट मीन्स फॉर एवरी एक्स in this interval, the function value should be unique, real and finite. Boundedness की कंडीशन लगा के हमने कहा हमें इन्फिमम और सुप्रीमम भी अवेलेबल होंगे, such that every function value at every point in the interval will be bracketed between infimum and supremum. फंक्शन की कोई वैल्यू इस इंटरवल पे सुप्रीमम से ऊपर नहीं जा सकती, इन्फिमम से नीचे नहीं जा सकती। Now, since f is bounded on the large interval, it has to be bounded on each of the subinterval. When I consider a partition, I make subintervals, and then I say that when f is bounded on the larger interval, f has to be bounded on each of the subinterval. In that case, in each of the subinterval, a function will have the infimum over the subinterval and a supremum over the subinterval. That means in every subinterval, you will have different infimum and different supremum. पहला इंटरवल जो x0 से x1 तक है, जिसकी विड्थ x1 माइनस x0 है, इस पर फंक्शन की वैल्यू दो फाइनाइट नंबर्स के दरमियान होंगी, m1 और कैपिटल M1. Second interval, you will have, if I make a graph of this type, so एक इंटरवल मेरा ये है, तो यहाँ पे सुप्रीमम ये है, इन्फिमम ये है। दूसरा इंटरवल अगर मैं ये बना दूँ, तो इन्फिमम ये है और सुप्रीमम ये है। So every interval will have their own. हाँ, अगर मैं ने अपना जो इंटरवल है जिसमें इंटीग्रेशन कर रहा हूँ वो ये है, तो ओवरऑल सुप्रीमम इज दिस एंड ओवरऑल इन्फिमम मे बी दिस. So every infimum will be greater than the overall infimum. Every and the overall supremum will be greater than every supremum of an individual interval. Okay जी, we'll list down all these things. कि फर्स्ट इंटरवल में ये सिचुएशन है, फंक्शन की वैल्यू m1 से कम नहीं हो सकती, m1 कैपिटल M1 से ज़्यादा नहीं हो सकती. सेकंड में स्मॉल m2 स्मॉल कैपिटल M2, nth इंटरवल में स्मॉल mn and capital Mn. Now with this setup, if f is neither increasing nor decreasing, that is shown here, we can still form lower and upper sums. Like I've shown here, अगर पहला इंटरवल सब इंटरवल जो है उसमें इन्फिमम ये है, तो अब रेक्टेंगल जो है वो एक लोअर रेक्टेंगल की तरह है. दूसरे इंटरवल पे आई एम नॉट, इस पे ये इत्तेफाक से इन्फिमम जो है वो राइट हैंड पॉइंट पे है. सेकेंड इंटरवल पे इन्फिमम ना लेफ्ट हैंड पॉइंट है ना राइट हैंड पॉइंट है. थर्ड इंटरवल में फिर इन्फिमम जो है वो लेफ्ट हैंड पॉइंट है, जो कि पिछले इंटरवल का राइट हैंड पॉइंट है और सुप्रीमम है. So lower in rectangles बन गई every सब इंटरवल के लोअर बाउंड से या इन्फिमा से.
So in according to the figure, lower sum will be m1 into width of first interval, m2 into the width of second interval, m3 into width of the third, जो कि ग्रीन से हमने शो किया हुआ है. अपर सम, सो स्मॉल इन्फिमम के बजाय हम सुप्रीमम इस्तेमाल करें, तो नीचे हमने इसको इस फिगर में अपर सम को सुप्रीमा से बनाया है, तो वो लाइक अपर रेक्टेंगल्स हो गए. Now with n sub intervals, जो कुछ हमने अभी किया 3 सब इंटरवल्स पे, वो n सब इंटरवल्स पे कर सकते हैं. और इसका मतलब ये है कि हमारा लोअर एरिया will be made from infimum of ith interval multiplied by the width of the ith interval. Upper area कैसे बनेगा? Supremum of the ith interval multiplied by width of the ith interval. That means जो इन्फिमम से मल्टीप्लाई किया डेल्टा को, ये रेक्टेंगल छोटी है, और जहां सुप्रीमम से मल्टीप्लाई किया डेल्टा एक्स को, वो रेक्टेंगल बड़ी है. For every interval we have this. So we say that the lower sum on the partition P for the function f over the interval this is the sum of all such contributions. And the notation we use is capital L bracket P for partition which can vary. Partition कैसे vary हो सकता है कि हम पॉइंट्स के सिलेक्शन, जैसे यहाँ मैंने 1 2 3 4 पॉइंट्स लिए, मैं 400 पॉइंट ले लूँ तो पार्टीशन चेंज हो गया. So we read this as lower sum for the function f over the partition P. ये बनाने के लिए मैं हर सब इंटरवल के इन्फिमम को इंटरवल विड्थ से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा. इसी तरह अपर सम of the function over the given partition or any partition, हर सब इंटरवल के सुप्रीमम को इंटरवल विड्थ से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा, तो दैट बिकम्स द अपर सम. नोट दैट थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि फंक्शन इज बाउंडेड, तो ओवरऑल इंटरवल पे जो इसका इन्फिमम है स्मॉल m और कैपिटल m विदाउट इंडेक्स, और हर सब इंटरवल की सूरत आ गई है. एंड आई सेड दैट ओवरऑल जो इंटरवल पे इन्फिमम है, दैट will be less than or equal to each of the infimum of a sub interval, जिसको मैंने ऊपर एक फिगर में भी आपको शायद बताया था. फॉर एग्जाम्पल इस फिगर में ओवरऑल ये है इन्फिमम पूरे इंटरवल पे. ना दिस इन्फिमम is greater than this infimum. This infimum is also greater than this infimum. This in itself इस केस में ओवरऑल जो है m वो m2 के बराबर है, which is less than m1 and also less than m2. So जो ओवरऑल इंटरवल पे infimum है फंक्शन का, that will be less than or equal to infimum of the function on every interval. That is why this line is written. Every infimum in every over every subinterval will definitely be less than or equal to the supremum for that interval, and the largest supremum of the overall function over AB, which is capital M, is the largest one, and हर सब इंटरवल का जो सुप्रीमम है इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे छोटा या बराबर होगा. So we can write down कि m times delta xi will be less than or equal to mi delta xi will be less than or equal to capital Mi, यानी infimum of the subinterval, supremum of the subinterval, and on the extremes we have infimum of over the whole interval, supremum over the whole interval for every interval. If we add all these inequalities written here, so left side पे क्या बनेगा? इस inequality को ऐड करें.
So when I add all such terms, that will in fact make m times delta x. So m is the overall infimum, बाहर आ गया. That means summation delta x. तमाम इंटरवल विड्स को ऐड करेंगे तो टोटल इंटरवल की विड्थ आ जाएगी. हर इंटरवल के इन्फिमम को आपने इंटरवल विड्थ से मल्टीप्लाई किया एंड दैट गिव्स यू द लोअर सम. हर इंटरवल के सुप्रीमम को इंटरवल विड्थ से मल्टीप्लाई किया, दैट गिव्स यू द अपर सम. Every interval width multiplied by the overall supremum of the function over the interval AB. So m is fixed, so m is taken outside. Sum of the widths of every subinterval give you the width of the overall interval B minus C. सर मुझे एक बात नहीं समझ आई कि हम लोग इसके अंदर जब इंटरवल्स बनाते हैं तो हर इंटरवल का राइट हैंड पॉइंट जो होगा वो अलग अलग होगा, तो हम लोग इंफिमम एक फिक्स करके कैसे डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हर पॉइंट में जो इंफिमम होगा वो सेम तो नहीं होगा ना हर इंटरवल का, तो हम लोग ने इसके अंदर सेम कैसे कंसिडर करा है? हमने सेम कंसीडर नहीं किया सर. This is my ith interval. Okay. इसका ये है infimum, ये है सुप्रीमम. चुनाचे एक मैं ये बना रहा हूं इन्फिमम के साथ, एक मैं सुप्रीमम के साथ बना रहा हूं, और ऐसा हर इंटरवल पे कर रहा हूं. ओके. राइट. तो इन सब का सम इन सब के सम से छोटा होगा. यस. एंड दिस विल बी लेस देन ओवरऑल इन्फिमम, पता नहीं कहाँ है, यहाँ पे है, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स आई. ओवरऑल सुप्रीमम वहां पे है. This is what was written there. I तो hope you सर get it. नहीं, लेकिन हमने इसके अंदर से m कॉमन ले लिया ना. बेटा ओवरऑल सुप्रीमम तो एक और इन्फिमम तो एक ही होगा ना. Every sub interval will have a separate infimum and separate supremum. उनको मैंने बाहर नहीं निकाला, उनको मैंने ऐसे ही रहने दिया क्योंकि ये लोअर सम बन गया और ये अपर सम बन गया. यहाँ पे ओवरऑल इंटरवल पर जो इन्फिमम है वो फिक्स है, वो बाहर निकाल दिया और इंटरवल विड्थ्स ऐड कर दी. ओके सर, समझ आ गया. That's good, thank you. आवाज ऊंची करें तो बात जल्दी समझ में आ जाती है. Now the interval AB can be partitioned in a variety of ways, and in fact an infinite number of ways, but this will always be valid with f bounded on this. Let us try to understand the intensity or seriousness of this statement. मैं 3 इंटरवल बनाऊं, 300 इंटरवल बनाऊं, 3000 इंटरवल बनाऊं, लोअर सम ने अपर सम से नीचे ही रहना है. और यहां m टाइम्स ये जो बना रहे हैं, दैट इज, यार फ्री हैंड में लाइनें सब सही नहीं बन रही अभी तक, मैंने बहुत प्रैक्टिस की रात में. तो तमाम इंटरवल जितने भी 5 हैं, 500 हैं, 5000 हैं, सारे सब इंटरवल्स की वेट्स ऐड होके विल नॉट बी मोर देन b माइनस ए, और यहाँ पे b माइनस ए.
Now, if anyone is confused about that, पहला interval width ये, दूसरी interval width ये, तीसरी interval width ये, and so on. आखिरी interval width xn minus 1. इससे पिछली interval width xn minus 1 अपने minus. 5 से पहले सबमिशन कर देना। अरे नहीं, मैं बता रहा हूँ कि कट रहा है सब कुछ। क्या कुछ कट रहा है? x1 कट रहा है, x2 कट रहा है, x3 कटेगा एंड सो ऑन, xn minus 1 कटेगा, xn minus 2 कटेगा। सो बचेगा क्या? आखिरी पॉइंट और पहला पॉइंट, दैट मेक्स b minus a। तो ओवरऑल सुप्रीमम कॉमन निकाल के तो मैं सारे सब इंटरवल्स की लेंथ को ऐड कर रहा हूं, तो वो पूरे इंटरवल की लेंथ बन रही है। इसी तरह इन्फिमम को बाहर निकाल के, मगर इसको मैं कुछ नहीं कर रहा, इसको मैं कह रहा हूं कि दिस इज लोअर सम of the function over the partition, this is the upper sum of the function over the partition। और जिस तरह हमने इन कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया है, every lower sum over every partition, sorry, a lower sum over any partition, and then same partition used for upper sum, and this relation will go nowhere। ये रहेगी। पार्टीशन चेंज करेंगे, दोनों जगह चेंज करेंगे, ये नहीं कि यहाँ पे कोई और पार्टीशन ले लिया और यहाँ कोई और पार्टीशन लिया। वी आर टॉकिंग अबाउट सेम पार्टीशन हियर। So this I said statement is an important statement, and we have to keep this in mind, the meaning of this. We shall see that a lower sum can be increased। Okay, I have shown you for x square कि अगर मैं नंबर ऑफ पॉइंट्स बीच में डालता जाऊं तो लोअर सम जो है उनमें छोटा छोटा एरिया ऐड होता चला जाएगा, और अपर सम को मैं कम कर सकता हूं। तो वी शैल सी दैट लोअर सम। ना अब देखो, मैंने यहाँ पे पार्टीशन के ऊपर एक सुपरस्क्रिप्ट लगा दिया है, जस्ट टू इंडिकेट दैट वी कैन कंसीडर एनी पार्टीशन। Lower sum can be increased selecting different partitions, but none of the lower sum can ever exceed an upper sum। This means set of all lower sums is bounded above। The next point that we need to keep in mind, we can सर increase लेकिन वो इक्वल तो हो सकता है ना, क्योंकि हमने सर सिर्फ लेकिन वो इक्वल तो हो सकता है ना लोअर सम का एंड अपर सम का। अपर सम और लोअर सम की इक्वालिटी तक अगर हम पहुंच गए तो इंटीग्रेबिलिटी तक पहुंच जाएंगे। अभी हमारे पास कोई गारंटी नहीं कि लोअर सम किसी पार्टीशन पे निकालें तो वो अपर सम के बराबर हो। हमने एग्जांपल ऐसा किया था एक्स स्क्वायर का, जिसमें इन्फिनिट रीमन सम लेफ्ट साइड से राइट साइड से सेम आया था, क्योंकि वो इंटीग्रेबल था। अभी तो मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ फंक्शन एफ के बारे में ये पता है कि ये बाउंडेड है, बस। इंटीग्रेबल है कि नहीं है ये तो मैंने अभी बात ही नहीं की। दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि यहाँ से जो हम इस जगह से जब हमने बात शुरू की, यहाँ से अनइक्वली स्पेस पार्टीशन, यहाँ से अब हम थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन डेवलप कर रहे हैं। इंटीग्रेबिलिटी तक अभी तक पहुंचे नहीं है, टूल्स डेवलप कर रहे हैं जिनको इस्तेमाल करेंगे हम इंटीग्रेबिलिटी डिफाइन करने के लिए, इंटीग्रेबिलिटी डिस्क्राइब करने के लिए। ओके जी, सो आई वाज एट दिस पॉइंट। पहली अहम बात तो ये है कि पार्टीशन हम मुख्तलिफ बना सकते हैं। दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि लोअर सम जो है कैन बी इंक्रीज्ड सिलेक्टिंग डिफरेंट पार्टीशंस, मगर कोई भी लोअर सम जो है वो अपर सम से बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लोअर सम्स is bounded above by the upper sums। Similarly, we can decrease upper sums, magar none of the upper sum can ever be smaller than a lower sum। That makes a set of third important point, set of all upper sum bounded below, set of all
lower sum bounded above. Thus, we come at the definition of what we call lower integral and upper integral. This is a set of all possible partitions and corresponding lower sums. In lower sums का जो supremum है, least upper bound, it's not going to exceed the upper sums. इसकी नोटेशन हम ये लिख रहे हैं जैसे कि इंटीग्रल a to p और a के नीचे छोटा सा निशान लगा रहे हैं to indicate that we're talking about lower sum and we call this thing lower integral. क्या चीज? The supremum of all possible lower sums is the lower integral. इसी तरह upper sum को डिक्रीज किया जा सकता है. The infimum of all upper sums is the upper integral और इसके लिए हम इंटीग्रल a to b और b के ऊपर निशान लगाया. So we are inching towards the concept of integrability, and this definition is our first major step after small steps taken in terms of के lower sum क्या होता है, upper sum क्या होता है, partition क्या होता है, partition change करके हम क्या कर सकते हैं. Changing partition, we can increase the lower sum. Changing partition, we can decrease the lower upper sum, so on and so forth. But none of the lower sum is going to exceed any upper sum. None of the upper sum can be less than any lower sum. So set of all lower sum has to be bounded above, and that supremum, that there will be supremum. ज़ाहिर है अगर एक set bounded है तो हमारी completeness property कहती है कि supremum exist करेगा. उसको हम lower integral कह रहे हैं. Set of all possible upper sums, infimum इनका होगा, that will be called upper integral. Before we proceed further, let us see how a lower sum can be increased and an upper sum can be decreased using refinement of a partition. The word refinement. Refinement is sort of fine-tuning. And physically it means partition में number of points का इजाफा कर दें और number of sub-intervals बढ़ा दें. So we see that how it happens. कि जैसे ही हम एक point extra डालें किसी partition में तो lower sum जो है वो बढ़ जाएगा, upper sum कम हो जाएगा. So if a partition P prime is there of an interval, इसकी refinement से हमारा क्या मतलब है? It is a refinement of some partition P of the same interval if every x in the partition P is also contained in P prime, that is partition P में जो points हैं set है, that is a subset of this partition which is being called refinement. मगर P prime में P prime is not a subset of P. That means P prime contains some extra points that are not in P. So, keeping this in mind, एक partition P है, एक partition P prime है. P prime. सर ये refinement को थोड़ा दोबारा बता दें. X0, X1, X2, X3, X4. फर्स्ट करो ये मेरा पार्टीशन है इंटरवल ए बी का, ठीक है. X0, X1, X2, X3, X4. Okay. Now I introduce a point here and make a new partition. X0, X1, X2 और X2 के बाद मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाला अल्फा, X3, X4. Now P is a subset of P prime.
P का हर एलिमेंट P प्राइम में है? Yes, sir. Not otherwise. यानी P prime is not a subset of P, as P prime contains some extra point. This is refinement of a partition. Okay, sir. ठीक है? Of course, मैं जब ज्योमेट्रिकल आपको डिस्क्राइब कर रहा था, वहाँ मैं पार्टीशनिंग कर रहा था, अब मैं रिफाइनमेंट इस्तेमाल कर रहा था। एक्स स्क्वायर वाले फंक्शन में मेरे पास फर्स्ट करो 3 ही पॉइंट है, x0, x1, x2। तो मेरा एक लोअर सम क्या बनेगा? बट आई कंसीडर मोर पॉइंट्स। नाउ अब जो लोअर सम है उसमें ये आएगा पार्ट, ये पार्ट आएगा, ये पार्ट आएगा और ये पार्ट आएगा। तो इसका मतलब लोअर सम में यहाँ पे इतना इजाफा हुआ और यहाँ पे इतना इजाफा हुआ, 2 पॉइंट ऐड करके। अगर मैं सिर्फ ये एक वाला पॉइंट भी ज्यादा होएगा। हाँ, लोअर सम बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे मैं पार्टीशन में पॉइंट्स Yes. ऐड करता चला जाऊंगा विच आर नॉट इन द ओरिजिनल पार्टीशन, तो अपर लोअर सम जो है वो बढ़ता जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव तो थ्योरेटिकली। सर हम इसको बोलते हैं रिफाइनमेंट। जी, exactly. Introducing more points into the partition is refining the partition. So, अपने साथ से संभाल के रखिए। जो चीज़ें हम ज्योमेट्रिकली बड़ी आसानी से देख रहे हैं उनको प्रूव करना, and you have to play with symbols and do some algebra. Original partition from x0 to xn, and we introduce an extra point alpha in the interval xk to xk plus 1, यानी इन दो से के दरमियान हम एक अल्फा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। Right now, if I look at the lower sum on this partition, which is made out of infimum of every subinterval into width of every subinterval, मगर मैं इस सम को जो कि फर्स्ट इंटरवल से nth इंटरवल तक जा रहा है, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, फर्स्ट इंटरवल टू k माइनस 1th इंटरवल, यहां तक। उसके बाद जो kth इंटरवल है उसका कंट्रीब्यूशन जो आ रहा है उसको मैंने सेपरेट लिख दिया, और उसके बाद जो कुछ आ रहा है उसका सम मैंने अलग लिख दिया। So I have broken the lower sum on the original partition into 3 parts. One, contribution of the kth interval, जिसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट p प्राइम में इंट्रोड्यूस किया है, उसको अलग लिखा, उससे पहले के सम को अलग लिखा, उसके बाद के सम को अलग लिखा, और जहन में रहे कि mk into delta x is this. Then I try to write down the lower sum of for the new partition which has only one extra point. अब ये one extra point आया है, उसने क्या किया है? उसने xk minus 1 और xk के दरमियान कहीं पर एक अल्फा डाल दिया है, लिहाजा इस पर एक सुप्रीम इन्फिमम होगा और इस पर एक और इन्फिमम होगा। ओके, तो मैंने जो पहले p पर लोअर सम लिखा था उसका ये हिस्सा तो अनफिक्स्ड है, एज इट इज आएगा, ये वाला हिस्सा, सॉरी, दिस इज रिटन एज इट इज, बट दिस पार्ट is broken into these two terms. Left side of these kth interval, right side of the kth interval. इसका मतलब kth इंटरवल दो इंटरवल्स में डिवाइड हो चुका है, दोनों इंटरवल्स में अलग अलग इन्फिमम है, तो इन्फिमम ऑफ इंटरवल फ्रॉम xk minus 1 to alpha
infimum into xk minus alpha. Alpha minus xk minus 1, alpha larger, xk minus 1 smaller. So इस एक टर्म की जगह अब दो टर्म्स आ गई. सर अल्फा एक्स के और एक्स के प्लस 1 के बीच में नहीं है. k minus तो अल्फा का इंटरवल ऊपर आपने अलग लिखा ना. oh, that is the confusion of equation. So now it is असल में समझने की बात यह है कि हमने बीच के एक इंटरवल में एक पॉइंट एक्स्ट्रा डाल दिया. उसकी वजह से बीच का जो ये कंट्रीब्यूशन है ओरिजिनल पार्टीशन पर, अब नए पार्टीशन रिफाइंड पार्टीशन में इसके दो कंट्रीब्यूशन आएंगे. इसके लेफ्ट हैंड साइड पर एक इन्फिमम होगा, राइट हैंड साइड पे एक इन्फिमम होगा. तो इन्फिमम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड सब इंटरवल, and infimum on the right hand side of the divided subinterval into width of the right hand side of the, that is the thing that needs to be understood. और ये वाला sum हमने ऐसे as it is रहने दिया. Now we see what's the difference between this one and this one. That is lower sum on partition P prime minus lower sum on partition P. तो ये sum cancel हो जाएगा. This cancels with this cancels with this minus this. So I'm left with that W1 alpha minus k minus 1, W2 xk minus alpha, जो के बचेंगे lower sum of partition P prime minus, जब हम इनका डिफरेंस ले रहे हैं तो माइनस ये बचेगा. Kth subinterval पे infimum multiplied by the width of the keep track that W1 is the infimum of the left hand side of this new subinterval and W2 is the infimum that will appear at some point in the right hand side of the interval. And the difference of the two partition, the refined partition, not the two partition, the difference of the lower sum on the two partition, the refined partition, the lower sum minus unrefined, yeah, subset partition पे lower sum, that comes out to be this. Geometrical construction or place of point, it is introduced to make one subinterval further subdivided, and we reach that the difference of refinement, difference due to refinement in the lower sum is this much. Now we have to see that whether this is positive or not. अगर ये positive हम prove कर दें किसी तरह से, तो lower sum on P prime minus lower sum on P greater than or equal to 0 prove कर दें, तो that means lower sum on P prime is greater than lower sum on P, and हम prove कर लेंगे कि refinement की वजह से lower sum increase हो गया है. इस चीज को पॉजिटिव प्रूफ करने के लिए सर ये वाली लाइन एक दफा वापस समझा देंगे, ये 1 और 2 को जो आपने कंबाइन किया है, 1 और 2 को जो सब्ट्रैक्ट किया है. हाँ, इनफैक्ट मैं सिर्फ ये लिख दिया कंबाइनिंग 1 और 2, और एक्चुअली व्हाट वी हैव डन कि ये वाला जो, लेट मी ब्रिंग द टू थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू, कि ये वाला जो लोअर सम है जो कि पार्टीशन डिफाइंड पार्टीशन पे है, उसमें से इस वाले लोअर सम को सेपरेट किया है. ये पार्ट और ये पार्ट मैचिंग थे, कैंसिल हो जाएंगे. ये पार्ट और ये पार्ट मैचिंग थे, कैंसिल हो जाएंगे. These two terms that have appeared as new things in the refined partition lower sum minus this term in the lower sum of the unrefined partition will be the difference, this minus this. So lower sum on the refined partition minus lower sum on the unrefined partition is the difference of these two terms at it minus this term.
Is it all right? Yes, sir. Now, मैं ये इसके बाद कह रहा था कि इसको मुझे किसी तरह से प्रूफ करना है कि ये पॉजिटिव होगा. Now, I have to show that this is greater than or equal to 0. That will make sure that lower sum on the partition P prime is greater than lower sum on the undefined partition. उसके लिए हमने कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट किया इसके अंदर. कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो पहले 6 टर्म्स इनको पहले तो इनको सबको मल्टीप्लाई करके खोल दिया. इनको खोल देने के बाद ये 6 टर्म्स हैं और मैंने इनको इसमें एम के दैट इज इन्फिमम ऑन द kth इंटरवल मल्टीप्लाइड बाय अल्फा. इसकी कोई ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. इसकी अलजेब्रिक सिग्निफिकेंस है कि अब ये 4 के बजाय 8 टर्म्स हो गई, जिसमें से मैं रीअरेंज करके फैक्टराइज करके ये हासिल करता हूँ. What does we get? This. And then we say, note that W1 minus MK has to be either equal or positive. Alpha minus XK minus 1 is positive. XK minus alpha is positive. अब ये मुझसे मत पूछना कि ये कैसे आ गया. 6 टर्म्स को हमने ये ऐड सब्ट्रैक्ट करके 8 बनाया, उनकी रीअरेंजमेंट की इस तरह से कि हमारे पास ये रिजल्ट आया. अब हम ये बता रहे हैं हमने कि ये कैसे सोचा कि हमें यही ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. इसलिए कि मुझे ये साबित करना था. I have to prove that this is positive. So I have to create positive terms out of all this collection of 6 terms. Collection of 6 terms. इसमें से पॉजिटिव बनाना है मुझे. मैं इनमें से पॉजिटिव नंबर्स वाज़े करके नहीं दिखा सकता, जिसके लिए किसी दीवाने ने कभी सोचा होगा कि अगर ये कर दिया जाए, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, then this can be rearranged into this form where every factor, every term is at least 0 or positive. It cannot be negative. When this cannot be negative, जिसकी कुछ लॉजिक यहाँ हमने डिस्कस की हुई है, that means that this difference is not going to be negative. It will be at least 0, and that means the lower sum on the refined partition is greater than the lower sum on the unrefined partition, which proves our hypothesis that increasing refining a partition increases the lower sum. Just adding 1 point, we have got this. That is sufficient to show that refining a partition, चाहे आप 100 के बजाय 1000 points consider कर लीजिए, lower sum is going to increase always. I will stop at this point. सर ये वाली बात रिपीट करेंगे? देखो, ये वाली बात तो रिपीट नहीं कर रहा मैं. सर ये जहाँ आपने लिखा है ना as mk is smaller, ये यहाँ इस वाले पार्ट से. ये भाई mk is the infimum on the kth interval of the original partition. तो जो ओवरऑल इन्फिमम होगा वो सब इंटरवल्स के जो इन्फिमम्स हैं उनसे छोटा या बराबर होगा ना. ये बात पहले भी हो चुकी है. अब इस इंटरवल को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया. mk is the infimum of values of the function over the kth interval, whereas w1 is the infimum on this part of the interval and w2 is the infimum of the function on this part of the interval. ये दोनों जो हैं इससे बड़े नहीं हो सकते. So mk is smaller than these two new infima that have come into our discussion. जिसकी वजह से w1 minus mk positive, w2 minus mk positive. That means these two are positive. Alpha minus xk minus 1 is due to their physical position on the line. They are purely positive. This is also purely positive. यहाँ तो 0 होने का इम्कान है, लेकिन यहाँ पे नहीं है. Overall, this structure is going to be greater than or equal to 0, and that makes lower sum on the partition to be larger than
in refined partition is larger than the lower sum on the unrefined partition. Thus, even with just one extra point, the lower sum increases. Increasing number of points in a partition, doing more refinement, keep on increasing the lower sum, but that will always be less than upper sum. Similarly, we can prove that refinement of a partition will decrease the upper sum. I stop at this point, and I have some commitment which was unscheduled. तो मैं दूसरा सेशन आज नहीं कर सकूंगा. अगर मुझे टाइम मिल गया तो आई विल टेल यू दैट सम either Friday evening or Saturday evening मैं इसका बकिया हिस्सा आपसे डिस्कस करूंगा. एंड ये जो लेक्चर है 10 पेज का आप मैं शेयर कर चुका हूँ आपके LMS पे, फोल्डर बना दिया थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से. इसमें अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्रूफ्स बहुत सारे मैंने स्किप किए हैं, बट वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन लेटर. Okay, ji, thank you very much. Let me first stop the recording. Thank you, sir.